The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. सही बात है, ठीक है. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. ओ मार दिया, बढ़िया. उफ भाई. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे. मैं स्कार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक और नए एपिसोड में. तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में लाइक प्रोफेसर फिक से हमारी फाइनली मुलाकात होती है और हम उन्हें वो लाइक फटे हुए पन्ने जो उस किताब से गायब थे वो उन्हें दे देते हैं और उन्हें अपनी लाइक सारी जर्नी बताते हैं कि कैसे हम लोग फॉरबिडन फॉरेस्ट में उस गुफा में गए थे और वहाँ जाकर हमें आगे लाइक हम एक मैप चैम्बर नाम की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी दोबारा से मुलाकात जादूगर रकेम से होती है. और उन्हें ये भी हम लोग प्रोफेसर फिक को लाइक ये भी बताते हैं कि जादूगर रकेम ने इस किताब को वहाँ पर हमें लाने के लिए कहा है. इसके बाद हम लोग प्रोफेसर फिक के साथ इस किताब को लेकर मैप ऑफ चैम्बर में पहुंचते हैं. और दोस्तों, जैसे हम लोग इस किताब को मैप ऑफ चैम्बर में रखते हैं, अचानक से उन्होंने लाइक उसकी फर्श पर लाइक एक बहुत बड़ा मैप लाइक दिखने लगता है और जादूगर रकेम हमें बताते हैं उन्होंने और उनके सारे जो उनके जादूगर दोस्त थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी जादूगर एंशिएंट पावर को हासिल करने के काबिल होगा उसे उनके बनाए हुए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा. और दोस्तों, इसमें सबसे पहली परीक्षा थी जादूगर रकेम की, जिसके लिए हम लोग जाते हैं और काफ़ी खतरनाक फाइट होती है और बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके हम लोग इस परीक्षा को पास कर लेते हैं. इसके बाद दोस्तों, अब 2 परीक्षाएं और बचती हैं और इन परीक्षाओं तक पहुंचने के लिए पहले हमें काफ़ी सारे साइड क्वेस्ट करने हैं और काफ़ी सारी हॉगवर्ट्स की क्लासेस भी अटेंड करनी है. और इन क्लासेस की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो इसमें आज एक बहुत ही खास क्लास हमें अटेंड करनी है दोस्तों, जो कि है बीस्ट क्लास. जहाँ तक मुझे लगता है शायद हम लोग कोई फ्लाइंग बीस्ट आज लाइक अपने काबू में करने की कोशिश करने वाले हैं इस क्लास में. तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बीस्ट क्लास में आज हमारे साथ क्या होता है. चलिए क्वेस्ट बिगिन करें फिर. लेट्स गो. Welcome everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello. ये क्या कैसा क्रीचर है? Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. ठीक है, तो साइन कर लिया हमने ऐसे. अब That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? ठीक है, beast feed. चलिए खाना भी दे देते हैं. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. अरे मुझे लगा था हम कुछ खतरनाक बीस्ट यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, बट ये तो बेचारा छोटा सा. Right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? ठीक है. This way. The Neasels are over here. ओ अच्छा, वो रहे देखो. हाँ, अब कुछ बढ़िया बीस्ट आ रहे हैं ना. ओ भाई, तो शेर टाइप कुछ लग रहे हैं या जंगली बिल्लियां टाइप कुछ लग रही हैं यार. बट मैं तो कुछ एक खतरनाक बीस्ट का इंतजार कर रहा हूँ. Get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes.
Stupid thing. अरे बेचारे को उसको परेशान कर रहा है ये तो। Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. ये स्लिदरिन के हाउस के बच्चे ना हमेशा हरामी होते हैं कसम से। ये तो मैंने मूवीज में भी ऐसा ही होता था। ठीक है, बड़ा प्यारा सा जंगली बिल्ली टाइप है। ठीक है, इससे भी मेरे ख्याल ब्रश और वो उससे खाना खिलाना होगा हमें। Those two don't belong anywhere near this class. Okay. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your हाँ, चलो help. ब्रशिंग तो हो रही है Let's इनकी। carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. जरूर मैडम जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप Hello, कुछ खतरनाक Professor. बीस के बारे में बताएं You हमें। wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? I enjoyed it. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly. ठीक है। It does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. ये वो स्लिदरिन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही है। Resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? ठीक है। Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. ठीक है। Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. Over here. तो वो ये ना, हाँ पॉपी, ये हमें Did you कुछ need जरूर बताने something, वाली है। Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. अब आएगा मजा। You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. गाइस, मुझे लग रहा है अब कुछ बढ़िया बीस्ट हम लोग देखने वाले हैं। ओह, ये थोड़ी We're nearly there. डिफरेंट जगह है यार Just ये। ahead. अच्छा, ये ब्रिज के इस तरफ है, यहाँ पे हम लोग कभी आए ही नहीं है। Stand back. ओ भाई, इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं। Please meet Highwing. हाईविंग। Isn't she just magnificent? वाओ यार, कितना प्यारा है ये। Introduce yourself to her, but be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. हिपोग्रिफ्स, हाँ। ओ यार,
भाई ऐसा रियल में होता तो कितना सही होता ना। मस्त। I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. तो ये क्या हमारा हिपोग्रिफ है? मतलब हमारा बर्ड हो गए। ठीक है, दोस्ती तो हो गई हमारी इससे। अरे चले गए तो। अरे यार हमें उड़ाना है भाई से। शिट। So, what did you think of Highwing? She was brilliant, man. Seriously. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. ठीक है। You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Would be good to investigate. I wouldn't poachers are okay. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ठीक है, तो 20 क्लास तो हो गई। मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग इसकी मदद करेंगे और उसके थ्रू हमें ये क्या बोलते हैं हिपोग्रिफ्स मिल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? द किटेगस लूनर लेमेंट। ठीक है, एक तो ये है रिसेप्शन हॉल, ही है द रिसेप्शन हॉल। ठीक है, चलिए पहले ये टास्क कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर है। ओके, यहाँ वेट करना होगा हमें। अच्छा हाँ, इनसे बात करने का मिशन भी था। ये कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं हमसे, इसके बारे में कुछ था। इनसे बात कर लेते हैं। Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. हाँ, दारू पी हुई थी इन्होंने। Rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ठीक है। Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. ठीक है। Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle.
A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Revelio. Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? ठीक है. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. ठीक है, help तो करेंगे I'd be glad to definitely. help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. ठीक है. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. ठीक है. Good luck. Oh, and thank you. 3 जगह, एक जगह तो यही है, 3 जगह बताइए. अच्छा ठीक है, ये वाला स्पेल हमें करना है. अरे चल भाई. चलिए, हो गया. बढ़िया. अलाहमोरा. इससे लॉक्स वगैरह खुल जाते हैं. यही था वो स्पेल जो हमें सीखना था. मुझे तो पावर ही नहीं दिख रही भाई. अच्छा सीधे ही हो गया. ओके. ओहो, ये तो कोई पजल है भाई. 1 मिनट. Use left and right to move sparks and rotate the dials until both corresponding gears are activated to release the lock. अच्छा. Sparks and rotate the dials until both corresponding gears are activated to release. Both corresponding gears are active. अच्छा, ये जो gears है ना इसके अंदर, इन्हें एक्टिवेट करना है. ठीक है. हाँ, ऐसा कुछ है. ओहो भगवान, अब खुला है लॉक. अच्छा. Well done. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. ठीक है, 1 मिनट. मुझे डिसइल्यूजनमेंट चार्म लेना पड़ेगा. और ठीक है. ठीक है, ऊपर जाना है हमें. Casting Reveal reveals authority figures and enemy locations, allowing you to. ठीक है, जरूर. ठीक है, reminder to staff. The Hogwarts house elves do an exceptional job of keeping the castle in order. They are seldom unprepared for any number of items that. ठीक है, फालतू है. ठीक है, यहाँ पर एक आत्मा है, इससे बच के जाना है हमें. बढ़िया.
ओह, गोल्डन स्निच काफी मिला है हमें, बढ़िया। ओह, यहाँ पर 2 आत्माएं हैं। आत्मा नहीं, एक तो इंसान ही है शायद। Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely... ओह, तो स्टूडेंट ही है भाई, इससे बचना है हमें। यहाँ चले गए, ठीक है। यहाँ पर एक गाइड पेज भी था। This must be the prefect's bathroom. प्रीफेक्ट्स बाथरूम, अच्छा ठीक है। यहाँ जाना है हमें। Hello, Amora. ओहो, अभी फिर से लॉक खोलना पड़ेगा। खोल दिया क्या? चलिए बढ़िया, ये सीख गए हम लोग गाइस। पहले मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था इसे खोलने में। ठीक है। ओहो, यहाँ तो प्रीफेक्ट्स है। One of those goblins comes near me, I'll hand him his hatch. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. ठीक है, इनसे तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। अब निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। She's right. Why don't you leave goblins alone, you troll? Hello, Amora. वैसे भी खोलना है क्या हमें? चलिए। यहाँ कहीं घूम रहा था ये। ये तो हो गया। चलिए, हो गया। सही है। ब्लू सोलर प्रोटेक्शन गॉगल्स, बढ़िया। तो निकलते हैं यहाँ से और हमें जाना है आगे। यहाँ पे एक गाइड पेज भी है और कोई दिख तो नहीं रहा मुझे वैसे यहाँ पे। ओ भाई साहब, यहाँ तो बहुत बंदे हैं भाई। What's that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human हे भगवान, आराम से जाना है। How's that? Well, all of the teamwork. ठीक है, अभी तो चलिए ये सब कुछ। And the golden snitch. Rather a lot like life. चलिए, ये भी हमने हासिल कर लिया। रिटर्न डेमिगुइस मून्स टू ग्लैडमैन, वो तो करना ही है भाई। अब निकलना कैसे है यहाँ से? हो ही जाएगा, धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, टीचर्स भी चले गए, बढ़िया। जाओ भाई जाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ दिख रहा था मुझे यहाँ पे। मैंने कुछ, हाँ ये रहा, देखो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं। और यहाँ पे कुछ है। ये कहाँ पे है ये कमरा? ओ यहाँ पर है। अच्छा, इसे खोल पाएंगे हम लोग? लेवल 2 लॉक। ठीक है, ये नहीं खुल रहा भाई। लेवल 1 लॉक से खुल रहे हैं अभी ना। चलिए, अब तो वापस ही जाना है हमें। Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No.
I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. बड़ा ही बोरिंग मिशन था कसम से यार, ये वाला तो A gentle person जबरदस्ती का। and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. अच्छा, Now, remember, अब the कुछ interesting moons बात हो रही are है। only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. चलिए ये वाला मिशन भी हो चुका है। Revelio. ऑलरेडी कलेक्टेड। अच्छा ठीक है, अब एक और स्टोरी मिशन है, वो भी कंप्लीट करते हैं गाइस। वो था, हमें जाना है अब हॉग्समीड, द हेल्म ऑफ आर्टकॉट। I need to travel to Hogsmeade. I should be able to find Sirona inside the 3 broomstick. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो मॉर्निंग कर लेते हैं। सुबह हो चुकी है। चलिए शॉप तक तो हम लोग पहुंच गए, चलते हैं अंदर। ओ भाई कितना अंधेरा है यार। हाँ अब ठीक हुआ। Hello there. Nice to see you. ओ इनकी आवाज बड़ी खतरनाक है। Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. इसी के बारे में It seemed as though जानकारी you were लेनी है on हमें। good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumours I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Lodgok, ठीक है? Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. ठीक है? Revelio. हमें उस गॉब्लिन को ढूंढना है जो इसका फ्रेंड था। क्या नाम था उन लेडी का? सरीना या सरीना ऐसा कुछ नाम था। उसे ढूंढना है, उससे हमें रनरॉक के बारे में कुछ पता लग सकता है। इसके अंदर ही जाना है भाई हमें। ठीक है। Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. ठीक है। Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Because Sirona trusts me. Sirona trusts me. Sirona नाम था She said उनका, she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind.
Okay. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. ठीक है. Very well. अच्छा, हमें वो relic ढूंढना I'll होगा. retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. ठीक है, हम लोग साथ जाने वाले हैं. बढ़िया. I'm ready. Good. There's no time to lose. ठीक है. Follow Ludgok to the tomb's entrance. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. I think यही लग रहा है मुझे. ठीक है, वो relic कोई helmet है जिसे हमें हासिल करना है. And there it is, the witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? Revelio. How nice to see you, my young friend. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Question: why is the helmet valuable? Do you know why Ranrock is working with Rookwood? What might I encounter in the tomb? हाँ, ये पूछ लेते हैं. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as in Fairy, ठीक है? The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. ठीक है. I'm It ready. all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. ठीक है, चलिए दोस्तों. अब ये relic निकाल के लाते हैं. Eagerly awaiting your return. भाई साहब, गुफा तो बड़ी खतरनाक लग रही है. Revelio. ठीक है, यहाँ पर एक गेट है और Sealed. इनको वो शायद, हाँ, ल्यूमॉस से शायद ये होते थे. ल्यूमॉस कहाँ गया? ये ना मेरे पास. हाँ, इनको मैं यहाँ रख लेता हूँ. 1 मिनट फिर से करना पड़ेगा. Lumos. अच्छा ठीक है, यहाँ पर ही तितली, इसे लेके आना है भाई. Moths. Curious. तब फिर वो गेट खुलेगा, देखना. Lumos. चलिए, गेट तो हमने खोल लिया. ओ भाई, घना अंधेरा. Beard. बहुत अंधेरा है भाई इधर तो. So the tomb for the helmet. ठीक है, यहाँ पर क्या है? Revelio.
ओह, यहाँ पर एक चेस्ट है। ठीक है, काम करते हैं, अपनी वो चेंज कर लेता हूँ यार मैं। Revelio. ठीक This है, can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. वो तो हम चले जाएंगे। ओ भाई, ओहो, इस दरवाजे के पीछे पता नहीं क्या है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आए थे, लेकिन मुझे फिर से अपना यार लेना पड़ेगा। ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार मैं। ल्यूमोस है ने अभी रखे रख काफी देर तक यार। Lumos. इसे लाना है हमें। अरे यहाँ पर क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं, पहले यहाँ लगा देते हैं इसे। एक लग गया। और भी तितलियाँ थी यहाँ पे। Revelio. ठीक है, हाँ एक तो ये रही। Lumos. एक तितली वहाँ अंदर है शायद। ठीक है, ये दरवाजे के अंदर जाना पड़ेगा हमें। Revelio. हाँ वो तितली शायद वहाँ पर है या बाहर ही तो नहीं है कहीं। मैं ऐसी फालतू में नहीं भाई, यहाँ कहीं नहीं दिख रही मुझे तितली। ओके, स्पेल चेंज कर लेता हूँ फटाफट से। यार आखियों से तो नहीं होना कहीं से। हाँ खुल गया इससे। ठीक है, ओ भाई दरवाजा। Revelio. ये रही वो। ठीक है, Lumos. चलिए। ओ भाई, गेट तो बड़ा जबरदस्त तरीके से खुला है यार, कसम से। I have a feeling I'm not alone here. Revelio. कुछ एनिमीज मुझे दिखे थे अभी, जस्ट मुझे दिखे कुछ। और मुझे अपना स्पेल चेंज करना होगा। ये ले लेता हूँ। वो देखो वो रहे। ओह ये तो कुछ ज़ॉम्बीज़ टाइप है। कोई दिक्कत नहीं। इनफेयर मस्ट बी स्टक फायर स्पेल्स टू मेक देम वल्नरेबल। ठीक है। अरे अटक क्यों रही है भाई? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, नाइस। ठीक है, ये तो सब निपट गए हैं। ओहो, स्टेंच ऑफ हेड। ओ यहाँ पर क्या है? Revelio. ठीक है यार, ये मुझे ना अपने ये इसका सेट बड़ा करना होगा भाई। बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, Lumos.
ठीक है, एक यहाँ पर थी। अरे कहाँ गया गेट? हाँ ये रहा। ठीक है, अभी दूसरा वाला इधर होगा शायद। Lumos. दूसरी वाली तितली किधर है? ठीक है। If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Power it somehow. Okay. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट। Lumos. हाँ, इनको यहाँ लाना पड़ेगा यार। हाँ देखो ना, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है, तो वापस रख दे। ठीक है, इससे हुआ क्या यार? यहाँ पर दोनों जगह पे हैं, इससे हुआ क्या? यहाँ पर कुछ मार्क कर रहा है। अच्छा ये नहीं, सर्च फॉर द हेलमेट। This has a moth imprinted on it, the same as the door. Lumos. एक और लगेगा क्या? शायद हो सकता है यार, ट्राई करते हैं। नहीं, इधर नहीं गए। और तो कोई जगह मुझे लग नहीं रही जहां पे ये I see. This is supposed to spin. But how? अच्छा, स्पिन करना है ऐसे, तो मे बी उससे मेरे पास एक स्पेल है ना, उससे हो जाएगा ये शायद। इससे हो जाएगा शायद। हाँ ठीक है, चलिए ये भी हो ही गया। अब मुझे फिर से Lumos. ठीक है, एक लास्ट था ये। आइए मैं, चलिए, गेट तो फाइनली खुल ही गया। ओके, Revelio. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. ठीक है, नीचे जाना है हमें। Revelio. ओह, यहाँ पर भी कुछ है। Revelio. केव के अंदर अंदर चले जा रहे हैं हम लोग। अभी नीचे उतरना है शायद। ठीक है। ओए, मैं लगा, सोचा मैं मर गया अब। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ रास्ता है। यहाँ पर तो बंद है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ है, मैं देख लेते हैं। Revelio. ये घूमकर इधर ही आ गया ये भी। आई थिंक वो रास्ता भी शायद ये सेम ही रास्ते थे। ओके, मुझे लग रहा है मुझे अपनी एक्यू वाली स्पेल निकालनी पड़ेगी शायद।
ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये हैंडल है ना। हाँ देखो, इससे कुछ हुआ तो है। अरे ये क्या, हम लोग वापस आ गए यार, ऊपर आ गए हम लोग। यहाँ से हम लोग आए थे। डैम ब्रो, ये क्या हुआ? ओके एक मिनट, यहाँ पे कुछ हुआ था अभी। ठीक है, यहाँ गुंडे आएंगे भाई, लग रहा है। खुला 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 सा एरिया लग रहा है ना। लॉन्च एन एनिमी टू डिस्ट्रक्टेबल ऑब्जेक्ट एंड डैमेज अ फ्रोजन एनिमी। ठीक है ठीक है। ओ भाई आराम से, बस हीलिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओह शिट भाई, हीलिंग चाहिए अपने को ना अब। ठीक है बहुत बंदे हैं भाई, बहुत बंदे हैं। ठीक है बढ़िया, नाइस। ये डिपोल्सो, अच्छा फिर डिपोल्सो, और अच्छा मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। डिपोल्सो वाला कौन सा पावर था, वो भी यूज़ करना है मुझे। ये था शायद ना, डिपोल्सो इनटू डिस्ट्रक्टेबल। हाँ अच्छा ठीक है, अब हो गया, एक हो गया, बस लास्ट ही है। मैं एंशिएंट मैजिक यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, बस चलो कर लेते हैं। बढ़िया।
बढ़िया। भाई हीलिंग दे दो यार, हीलिंग बिल्कुल नहीं अपने पास। ठीक है, अबे हमें ना वही वो ऊपर वो रहे, देख वहां पर पड़े हुए हैं। एक तो ये रही, Lumos. इसको यहाँ लाना होगा हमें और इसे स्पिन करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो पहुँच गए हम लोग। अब फिर से मुझे Lumos. इसे लेके कहाँ जाना है? बट अच्छा ये रहा गेट। ठीक है, ये हो गया। और Lumos. ओ यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये भी लग गया। अब नीचे वाले को कैसे लेके आएंगे यार? अब ये दिक्कत होगी, नीचे वाले को भी लेके आना ना ऊपर। ओहो, ओए यहां पर भी एक तितली है यार, क्या है? हट। बट फिर भी तो हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये गाइस इसको यहां रखना है। वही तो मैं सोचूं कि यार मतलब तीन तितलियों से कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं चढ़ेगा ऐसे भाई। Lumos. आजा तितली। नहीं ऐसे नहीं आएगी है। ठीक है अब हो जाएगा। अब तो कोई मतलब ही नहीं है ना। Lumos. ये आ गई। बस अब तो काम हो गया अपना। ओह फाइनली हो गया यार। वही तो मैं बोलूँ भाई कि 3 तितली से तो हो ही नहीं सकता ये। चलिए गाइस, अब हमें आगे चलना है। The witch's final resting place. अच्छा ठीक है। Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. Okay. The dead had better show this to Lord Gok. चलिए ये तो मिल गया। गुंडे उंडे नहीं आ रहे क्या? Thank God. यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। There must be some sort of mechanism for this doorway. हाँ, अब हम ये कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा हम गुफा से बाहर निकलने वाले, क्योंकि हेलमेट तो हमने ले लिया। हो गया, ठीक है, बढ़िया। Lord Gok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet. अच्छा। Only a dead ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. ठीक है। अच्छा तो मतलब वही है ना? I think those wretched thieves have their hands on such a relic. ठीक है। अच्छा तो जो वो रुकवुड नाम का बंदा है ना, वो मतलब रैनरॉक से अपने मतलब ना जैसे रिलेशंस अच्छे करने के लिए हेलमेट लेके उसके पास जाना गया है मतलब। और लॉर्ड गॉक ये बोल रहा था कि अगर हम लोग नहीं लेके जा पाए तो भाई हम तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये उजाला सा कैसे हो गया एकदम से? ठीक है चलिए चलते हैं। यहाँ से कहीं बता रहे हैं। हाँ पास में है क्या? नहीं तो अपने झाड़ू यूज करूँ क्या? मैं झाड़ू की स्पीड भी बढ़ चुकी है गाइस। ऐसा कर दो। ओह ये जो आयरिश म्यूजिक, स्कॉटिश म्यूजिक, पता नहीं किस तरह का म्यूजिक है, मुझे बहुत पसंद है यार ये। सही है ना, वीडियो के पीछे छुप छुप के। ठीक है ये लग रही है उनकी कैंप साइट मुझे। क्यों भाई उतार दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? ठीक है चले फिर फाइट करने।
blighted us a bit, I'll agree. Nonetheless, we have good spoils for our efforts. And 3 बंदे तो मुझे दिख रहे हैं. hold our चलिए फिर. There they are. The ash ones. ओ ट्रोल भी है यहाँ पे. अरे गलत उस पे चले गया यार. शिट. ओ भाई ट्रोल. डैम, ये ट्रोल कहाँ से आ गया? I've seen your magic. As if you could elude me. अरे यार ये मेरे पीछे पड़ गया यार. ओ भाई. Are you even trying? बढ़िया. अब इस फॉरेस्ट ट्रोल से लड़ना होगा मुझे. बाकी तो सब निपट गए ये. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. वो एक लास्ट बचा हुआ जादूगर. ठीक है, हीलिंग भी मिल गई. Quite conductive, aren't we? वो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार ये बंदा. Expulsion. Of inspiration. Well, you don't have to do better than that. और यहाँ और बंदे. शिट. गंदा फंस गया भाई, गंदा फंस गया. ओ ट्रोल से बच के, ट्रोल से बच के, ट्रोल से बच के. भाई. Shall we finish what we started? The man returns to the wolf. बैंड बच गई भाई अपनी. गलत बंदे पे मार रहा हूं मैं. एक तो ठीक है ठीक है, थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं इनसे. ठीक है, वो तो गया. एक लास्ट रह गया. ठीक है, ये तो गया. बढ़िया. Careful now. I know all about it. उफ. चलिए, निपट गए सबके सब. It's shameful what you've done to helpless beasts. अरे यहाँ पे एंशिएंट वो था यार. हट. ठीक है, चलिए ये लोग तो निपट गए. अब हमें ढूंढना है वो. Revelio. अब वो हेलमेट इन्होंने पता नहीं कहाँ रखा होगा. मुझे लग रहा है और बंदे अभी और हैं यार. इतनी इजीली फाइट खत्म नहीं हो सकती. यहाँ पर कुछ है शायद. यही तो नहीं है. नहीं. Revelio. ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है. मुझे सर्च आउट करना है इस जगह में. आगे जाना होगा हमें. यहाँ पर एक चेस्ट है. That's it. बढ़िया. ओह, अरे अब क्या हुआ? This is for Rookwood. Ashwanda assassin. Another. Let's see what you make of my new theory. It's the Glacier who do release Treadwell. My wand.
निकलते हैं यहाँ से पहले। ओ यहाँ पर भी एक बंदा है। You may be more skilled than इससे दूर रहे यार। इस पे अटैक, इस पे लगी नहीं। ओ यार ये भाई, इनको निपटा कर लेता हूँ। Come on. ठीक है। That's just the beginning. ठीक है, इसको मारना जरूरी था क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। ओह चिकन बन गई है। नाइस। अरे सब मर गए क्या? ऐसा कैसे? चलिए अब लॉर्ड गॉक जी के पास चलते हैं और उनको हेलमेट रिटर्न करते हैं। अपग्रेड से मुझे कुछ खासा सा चेंज लग नहीं रहा है, बट ठीक है। नहीं यार, स्पीड थोड़ी बड़ी है भाई। There's no telling what lies in wait for me in there. लीजिए सर, आपकी हेलमेट हम ले आए I हैं। retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. बढ़िया। It looks stunning, Lord Gok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly. ये भी ढंग से कुछ बता नहीं रहा है इसे। I'm glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. ठीक है। ठीक है। The Helm of Ordcott, ये क्वेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लॉर्ड गॉक जी हमारी कितनी मदद करते हैं इस चीज में हमें तो बाद में पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, पता क्या, तो जो प्रोफेसर घार्लिक का मिशन है उसे करने के लिए मुझे ये चाहिए। एक तो ये चाहिए वेनेमस टेंटिकुला और एक ये चाहिए मैंड्रिक, और ये दोनों चीजें मुझे डॉगवीड एंड डेथ कैप, जहां तक मुझे लगता है ये हॉग्समीड में ही है, तो वहां चलते हैं, हॉग्समीड चलते हैं और वहां से चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है शायद मैं सही कर रहा हूं। अच्छा ये रहा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये शॉप है, ऑल प्लांट्स, हाँ ठीक है, यहाँ जाना है गाइस हमें ना। Revelio. Watch yourself. Let's have you leave here alive. ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if it wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. ठीक है, मैं see where. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? ठीक है, मैंड्रिक और हाँ ये ठीक है। मुझे एक चीज़ और करनी है कि मैं अपनी ये चीज़ें सेल आउट कर देता हूँ यार।
things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. कोई दिक्कत नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें पहले तो ये चाहिए मैंड्रिक की सीड्स। भाई कितनी महंगी है ये। Always thrilled when a young one 2 ले लेता हूँ और 2 इसकी ले लेता हूँ। You'll go far. भाई साहब पूरे पैसे खत्म कर दिए यार, व्हाट द हेल। ठीक है, ये तो एक्वायर कर लिया हमने। Doors always open. You be sure to stop by soon. अब हमें ना इसे एनिमीज पे यूज करना है। अब वो कैसे होगा? यहाँ पे मुझे कुछ एनिमीज ढूंढने होंगे जिन पे मुझे ये यूज करना है, तब जाकर प्रोफेसर गार्लिक का ये मिशन हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। हाँ, इन जंगलों में चलते हैं, यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनिमीज हमें मिल ही जाएंगे। यहाँ मुझे कुछ दिखा तो रहा है, एक मिनट में पहले वो चीज़ ले लेता हूँ। मैंड्रिक ले लिया मैंने। ओ भाई ये देखो क्रीचर कैसा अजीब सी चीज़ है। ओ एक मिनट, मुझे स्पेल अपने चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा डिपल्सो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक टास्क तो हमने कर लिया गाइस ना। डकबक टंग भी मिल गया हमें। हमें एक क्रीचर और चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। हाँ इस तरफ कुछ है। ओ यहाँ पे क्या है? बहुत बंदे हैं भाई इधर तो। ओके ठीक है, अब मुझे एक काम करना है। वेनमस टंग ले लेते हैं। Assignment's all finished. Thought we'd forget about that goblin helm you stole. ओ यहाँ पर भी एक बंदा है। ओ यहाँ पे एक क्रीचर भी है। ओ हो। ठीक है, वो वाला मिशन हो गया हमारा, मैडम गार्लिक वाला। बढ़िया। I bet that one hurt. I'll still you little needle. What are you, a gobstone? You think you're so clever, don't you? चलिए ये तो गया। बढ़िया। Can't roll your way out of this. No! बढ़िया बढ़िया, ये सब निपट गए। अब हमें हर्पोलॉजी की क्लास करनी है। सब हो जाएगा फिर हमारा ना। ठीक है, चलिए अब गार्लिक मैम प्रोफेसर गार्लिक से बात करते हैं और फिर ये वाला क्वेस्ट भी कंप्लीट। Watching plants grow could be so interesting.
Chomping cabbage. सही है। मैडम जी किधर है? Wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. सही है। Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. अच्छा, levitation charm है ये, Wingardium Leviosa. Requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. सही है। Let's see you try your hand at it. जरूर। चलिए, Wingardium Leviosa को खोलते हैं। Correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. अरे चल नीचे। ओह, कर लिया। Wingardium Leviosa। ये हरमाइनी बोलती थी बहुत ज़्यादा हैरी पॉटर में। ठीक है, अब मुझे ये स्पेल अप्लाई करना है पहले तो। Wingardium Leviosa शायद यही है। ओके। The levitation charm, Wingardium Leviosa can levitate and move objects, control its position with a movement and use to fine-tune its distance and rotation. बढ़िया, हाँ ये काफ़ी एडवांस्ड है Leviosa से। Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. Wingardium Leviosa natural. चलिए, ये तो हो गया। सही है। अभी कम करते हैं गाइस, अब चलते हैं वापस अपने होटल ऑफ रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में। Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. क्या चीज़ है? He calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. ठीक है। Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. वो वाला मिशन आने वाला है। Will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Let's let Deke know when you're ready to go. Ready to leave. ठीक है, वो एक मिनट में एक काम कर रहा हूँ फटाफट से। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है। ये देखो, ओह काफ़ी सारा सामान मिला है। ठीक है, हमें गियर्स चेक करने पड़ेंगे अपने। पहले हैंड गियर्स में चलते हैं। हमारे पास 34, 36, ओ भाई साहब 36, 34 लगा लिया है हमने। ठीक है, इसके अलावा ओ आई गियर भी है। ये 38, 30, 32 ठीक है, ऑलरेडी सही है मेरे पास। और ये कुछ स्पेशल है, देखो इसमें सब कुछ ब्लू मार्क टाइप आ रहा है भाई, गजब। हेड गियर में मेरे पास शायद कुछ ऐसा खास नहीं होगा। हाँ, हेड गियर में ऑलरेडी बेस्ट है मेरे पास। ठीक है, आउटफिट में भी कुछ था। हाँ, ये ब्लू वाला देख रहे हो, बढ़िया यार, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। नाइस, ओ कितना सही है, वाह। ओके, एनीथिंग एल्स? नेकवेयर में कुछ है? ओ नेकवेयर में भी है भाई। 44, 43, 34, 39, ये भाई सबसे बेस्ट तो। हाँ नाइस, और है भी कितना प्यारा, गजब यार। ठीक है, आउटफिट में है कुछ अपने पास? हाँ नहीं, आउटफिट में कुछ नहीं है। एनीथिंग एल्स? आई थिंक डीक से बात करते हैं और हमारी 20 क्लास के लिए वो कुछ बता रहा था, वो देख लेते हैं। I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. ठीक है, वो बैग को यूज करना सिखा रहा है, जो हमें शायद बीस्ट को पकड़ने के लिए हेल्प करने वाली है या बीस्ट को लेकर कहीं लेके जाने के लिए हेल्प करने वाली है, ऐसा कुछ है। देखते हैं।
But seriously guys, बहुत अच्छी गेम है यार. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. अच्छा शायद पोचर्स भी इस बैग का यूज करते थे, शायद ऐसा कुछ कह रहे हैं. We have arrived. मैं यहाँ आया हूँ. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the pottle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. ठीक है. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. ठीक है, क्रीचर्स को पकड़ना है मुझे, बस ये करना है शायद, है ना. अच्छा मुझे ये पहले बैग को पॉइंट करना होगा. ठीक है. ओके. You got one. बढ़िया. अभी तो और ही पकड़ने होंगे. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. ठीक है, ये different है, ये beast नया है. Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. I'm ready, brother. Let's go. ठीक है. Jobberknoll. ये पता नहीं कोई नया ही बीस्ट है भाई. ये मैं नहीं जानता इसके बारे में. हिप्पोग्रिफ के बारे में मैं जानता हूँ, जो वो शेर जैसी चील है ना, जो उड़ती है. ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं क्या है. यहाँ पर पोचर्स भी है, शायद उनसे हमें लड़ना पड़ेगा. यार जो मेन बीस्ट है ना, उससे नहीं मिला रहे. ये बहुत चलाक हैं गेम डेवलपर्स ना. शायद ये पेड़ वही लग रहा है मुझे. ये रहा डीक. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. ठीक है. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Levioso, ठीक है. Easier to get in close and use the knapsack. सही है. I will try to rescue a jobberknoll. Rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. तो मुझे ठीक है, पहले मुझे लेवियोसो लेना पड़ेगा. लेवियोसो ये है ना. ठीक है. ओके. ये है क्या? Levioso. No need to be difficult. I mean you no harm. पकड़ लिया हमने एक जबनौल. ये तोते सी चिड़िया है यार. There. हाँ ये देखो. I'm not going to hurt you. हमें और पकड़ने हैं भाई, और पकड़ने हैं हमें. या हो गया? नहीं हो गया. अभी शाम डिफरेंट बीस के पास डिफरेंट बीस पकड़ने वाले हैं, शायद ऐसा कुछ होने वाला है. ओह सॉरी. डीक को मैंने उड़ा दिया था अभी. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Moon calves, अब ये किस तरह का बीस्ट है? ये भाई तो फिर निकल लिए. ठीक है. Oh, you cannot enter while mounted. Okay. अब यहाँ लैंडिंग भी नहीं कर सकते हम लोग. उतरने तो दो भाई. ठीक है. ये शायद पोचर्स की गाड़ी है, देख रहे हो. पोचर्स से लड़ाई होने वाली है हमारे, ऐसा मुझे लग रहा है. और यहाँ फ्लू फ्लेम भी है. Off on another adventure, are we? मून काफ हैबिटेट. ठीक है, चलिए. Hello, Deke.
Is this the clearing you mentioned? 10 beast हैं, ऐसा कुछ है शायद जो हमें पकड़ने हैं आज. Tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. ठीक है. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. ठीक है. I will rescue a moon calf. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. ठीक है, मुझे राहत करनी पड़ेगी पहले. ओके. चलिए, रात हो चुकी है. अब हमें मून काफ को ढूंढना है और यहाँ कहीं बता रहे हैं. ओ भाई, ये तो कुछ ये रहे. Oh no, you don't. Leviosa. ये करना ही था मुझे. वो कितना प्यारा है, देखो. आ गया, पकड़ लिया. चलिए, बढ़िया. Professor Howin. Moon calf, magical beast rescued. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Oh, यार, हमें देखना था यार. Supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. ठीक है. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Cool. Okay. हमें वापस रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जाना है. क्या मैं यहाँ से मैप से जा सकता हूँ क्या सीधा? आई होप जा सकें हम लोग. हाँ, ये रहा ना, देखो ना, ये शायद सीक्रेट रूम से मैप चैम्बर. हाँ, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जाना है हमें. चलिए, बढ़िया है. ये दूर से ही जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. अच्छा, हम यहाँ पे रिलीज कर रहे होंगे क्या इनको? चलिए. Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. ठीक है. What exactly did you think of? ये तो छोटा सा मुझे ज़ू टाइप लग रहा है ये. Heavens! अरे बाप रे! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. अंदर जाके. अरे मैं बता रहा हूँ, ज़ू टाइप है. हाँ. Inside when you're ready. I'm ready, man. Let's go. Meet Deke inside the new creation. एक अलग दुनिया बना ली हमने, एक अलग जंगल जैसी चीजें, और यहाँ पर हम अपने बीस्ट को छोड़ सकते हैं. It's amazing. यार मैजिक, ये तो बात मुझे बहुत सही लगती है. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Vivarium. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. जरूर. Hold. अच्छा, tap RB to open. And okay. सही ना? ओह, कितना प्यारा है ये. गजब. यार ये बहुत सही चीज थी यार. The vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. ठीक है. हाँ. Beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. ठीक है. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some.
अच्छा, कलेक्ट अ जॉबरनॉल फेदर, ठीक है, पहले तो इससे वो ले लेते हैं पफस्किन. Feed and brush this beast and it will release magical materials. Puffskins are round and fluffy beasts, soft enough to cuddle but tough enough to be thrown around. Puffskins will eat almost anything, but their favorite meal is bogies. They are common household pets for wizarding families because they are easy to maintain. Okay. पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे और ब्रश भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, ब्रशिंग हो रही है भाई की. चलिए, पफस्किन हमने कलेक्ट कर लिया. हमें करना है जॉबरनॉल के फेदर्स. जॉबरनॉल है किधर? ओ, यहाँ मून स्टोन्स भी हैं. हाँ, वो रहा. वो तो उड़ गया ब्रश लेके. ठीक है, चलिए, बढ़िया हो गया ये तो. ओहो, इसको मार मत दियो भाई. तो ठीक है, अब इसे खाना खिला सकते हैं हम लोग. चलिए, हमने फेदर्स भी कलेक्ट कर लिया. अब हमें मून काफ के फर चाहिए. वो भाई साहब किधर हैं? वो रहा. ये कितना प्यारा है, देखो ना यार. वाह यार. ओ, इसे तो मजे ही आ गए. इसे खाना खिला देते हैं. Oh, sorry. Feed and brush this beast and it will release magical materials. LB से समन होता है, ठीक है. ओह, सही. ठीक है, अब हमें क्या करना है? Speak with Deke. ठीक है, हो गया ये काम. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing. Achha. Making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. चलिए, चलते हैं. ठीक है, पोशंस. Enchanted items will use a room for requirement. This desk of description enchanted loom. हाँ, एक तो ये चाहिए मुझे यार. ठीक है. अच्छा, gear features one primary offense or defense stat by default. Magical materials can be used with the loom to add and upgrade a secondary stat or apply traits to your gear. Multiple small upgrades can yield a meaningful boost. Now, new beasts can be rescued at beast dens or unlocked in quest. New trait recipes can be collected in bandit camps. ठीक है. कुछ खास वजह decreased anti-venomous damage taken from spiders. और ये सही चीज़ है. चलिए, अपग्रेड कर लेते हैं. ठीक है. तो दोस्तों, अब एक ये लास्ट रह गया. ऐड अ ट्रेट टू एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, है ना. ये करना है मुझे. तो ये क्या है? व्यू बाय ट्रेट्स और स्कॉर्चिंग, सिग्निफिकेंट इंक्रीज स्पेल डैमेज,
While concealed by disillusionment, significantly increased damage with Defendo. ये पहला, ये वाला कर लेते हैं. अच्छा, weave trait. ठीक है, चलिए ये वाला भी हो गया. It's done. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. ठीक है. Thank you for your help, Deke. Okay. एक चीज़ ये करनी है, अब हमें करना है अगला क्वेस्ट फटाफट से, जो कि है उसका नाम क्या था, मेरे लड़के का नाम भूल गया. सेबेस्टियन शायद नाम था उनका. हाँ, इन द शैडो ऑफ द एस्टेट, शायद ये. हाँ. I promised Sebastian I would meet him Feldcroft. He hopes meeting a new student will bring some cheer to his sister Anne, but there's something ominous happening in Feldcroft. Meet Sebastian in the Feldcroft. In Feldcroft. Feldcroft क्या था यार? वो उनकी सीक्रेट जगह तो नहीं थी? ठीक है, चलिए ये मिशन करना है हमें. अरे बाप रे गाइस, हम लोग कोई नई लोकेशन में जाने वाले हैं क्या? वर्ल्ड मैप में जाना पड़ेगा मुझे. फेल्डक्रॉफ्ट तो बहुत दूर है. ओ अरे बाप रे, इन द शैडो ऑफ द, यहाँ पे जाना है गाइस हमें. ओफ, ठीक है. अरे बाप रे बाप, तो फिर तो मुझे अपने झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए. ठीक है, ये टोटली एक नई लोकेशन है गाइस, देखो तो सही. यहाँ पे ये उसका घर है ना, सेबेस्टियन का घर होगा ये. ठीक है, चलते हैं. मुझे बाहर निकलना होगा स्कूल से. भाई पता नहीं, इतना दूर तो मैं अभी तक कभी हॉगवर्ट्स से इतना दूर नहीं गया था. ये पहली बार हम लोग जा रहे हैं इतने दूर वाले एरिया में. चले देखते हैं क्या है. मुझे लगता है अपने झाड़ू की मुझे अपग्रेड, सेकेंड अपग्रेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही दूर का डिस्टेंस. उफ यार, पहाड़ों के ऊपर गजब. ये कौन सी जगह है भाई जहाँ हम लोग जा नहीं सकते? देखो ये पूरा बंद है ये जगह, और हम लोग यहाँ जा नहीं सकते. किसी जैसे चलता ना कि किसी मैजिकल चीज़ ने रोका हुआ है. मैं दिखाता हूँ आपको. देखो मेरा ये देखो, यू कैन नॉट एंटर व्हाइल माउंटेड. ओके, और मैं यहाँ उतर भी नहीं सकता हूँ मैं. ठीक है, छोड़ो, चलते हैं. स्पाइडर्स. ओह, भाई जगह तो देखो क्या, कितनी मतलब कितना बड़ा स्केल है ना इस गेम का. देखो तो सही. मतलब हम गेम को ऑलमोस्ट हम लोग इसके एंड में ही हैं, और हम लोग अभी तक इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं. हम लोग मतलब इस गेम के एरियाज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं. अमेजिंग यार भाई, हैट्स ऑफ भाई, मतलब डेवलपर्स को ना, सीरियसली यार बहुत बड़ी बात है यार, इस तरह से गेम को इतने बड़े लेवल पे बनाना. और ये क्या है भाई, हम लोग नई नई लोकेशन में पहुंच रहे हैं. और भाई ओ बाप रे बाप, कितना सही है यार. ये क्या है ये प्लेटफॉर्म जैसा? Enjoy suffering, do you? Break a shield charm with ancient magic throw. Up for a bit of dying, are we? गुड्डे थे यहाँ पे. ठीक है, इन सभी को लड़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी अपना स्टोरी क्रश करते पहले कंप्लीट. मतलब इवन आप इस गेम की मेन स्टोरी लाइन ख़त्म कर दोगे ना, उसके बाद भी बहुत कुछ है करने को. देखो यहाँ पे भी मैजिक उससे प्रोटेक्टेड है एरिया. ठीक है, हम लोग पहुँचने वाले हैं. बस पहुँच ही गए. यहाँ छत पर कोई है, सेबेस्टियन ही होगा, और कौन होगा? यहाँ उतर सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers.
If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. ठीक है? Come on. I'll take you to my uncle's. ये कह रहा था कि आन को किसने कर्स किया है, मतलब शायद किसी गॉब्लिन वगैरह ने किया है, और गॉब्लिन्स को ये लाइक जो जादुई छड़ी होती है वो लेने का कोई मतलब वो नहीं है, प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है उन्हें। ठीक है, और हमें शायद इस कैसल में भी जाना पड़ेगा उस इंसान से लड़ने के लिए, शायद कोई गॉब्लिन है यहाँ पे उससे लड़ने के लिए। ठीक है, पहले तो हमें शायद आन से मिलना है, चलते हैं। Off on another adventure, are we? Here we are. My sister should be just inside. Okay. चलिए मिलते हैं। Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. बट इन्हें कर्स क्या है इनका, बस अच्छी ठीक लग रही है तो। The better. But we haven't tried everything. There is no cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. अच्छा, कुछ किसी तरह का दर्द होता है इन्हें। ठीक है, अब शायद हमें कैसल जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। Sorry you had to see that. Speak with Anne and Solomon. You don't mind. I just need a moment alone. Okay. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. हमें अंदर जाना है और यहाँ पर भी किसी से बात करनी है। अच्छा, उनके अंकल ये boy will fray my last nerve. चलिए इनसे बात करते हैं। Excuse me, Mr. Sallow. Oh yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. ठीक है? I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Good day, sir. अब मुझे अब आन से बात करनी है हमें। I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. कोई बात नहीं, मैम। Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. वो goblins ने इसको बेचारे को ऐसा कर्स क्यों दिया? Told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being at Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. वो castle में clear करना होगा. You mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated.
by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Oh, I can try. Sebastian made his mind. ठीक है, देखते हैं. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. He was out of line. He is trying to do what's right. मुझे लगता है शायद वो सही कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं हाँ आउट ऑफ लाइन तो नहीं कह सकते हैं. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. ठीक है, अब मुझे लगता है ये तो मानेगा नहीं भाई. Loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Okay. कहाँ लेके जा रहा है भाई ये? All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Digging for something? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. कि यहाँ ऊपर बोल रहा है ना? This way. चलो फिर फटाफट चलते हैं. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. अरे बंदे आ गए क्या? Wizard is a dead wizard in my book. यार इनसे भी लड़ने का कोई सेंस नहीं है. ओह भाई यहाँ तो बहुत बंदे हैं. Rather unwise coming back this way. There you are. Let's get this over with. I won't rest. I will make you. ठीक है और कौन और कोई है बचा हुआ है? ग्लास नहीं बचा हुआ है. हाँ ये रहा. बढ़िया. डन. अरे भाई साहब. कम ऑन आराम से. I won't rest. How now you will regret coming. ठीक है. कहाँ उछल के गिरा हो देख रहे हो? ठीक है लास्ट ही रह गया. Rather unwise coming back this way. आ जाओ तुम्हारी बैंड बजाता हूँ.
नहीं ब्रो. I think you're so clever. आराम से, आराम से. I won't rest. Let's get this over. Little moon calf, far from home. Easily done. बहुत बंदे हैं भाई इधर. That was meant for me. Was that your best? ये मुझे शील्ड तोड़ना नहीं आया अभी तक ना. आराम से. बढ़िया. I confess. All done. सही है. That was a bit more than I'd bargained for. बहुत बंदे थे बट मजा आया. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Zarur. They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. एक तो ये क्या चीज है? Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once. Centuries. अच्छा. But that's all I ever heard. एक हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर रहते थे यहाँ पे. और मुझे लगता है उनको पक्का इन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा इन गॉब्लिन्स ने, और उनके पास जरूर कुछ होगा जिसे वो लोग चाह रहे होंगे. ठीक है. यहाँ पर कुछ है. अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने खुदाई की है. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. ठीक है. It might be worth taking a closer look at the house itself. कौन सा हाउस? यहाँ ऊपर. अच्छा यहाँ ऊपर दिखा रहा है. वो टूटा हुआ हाउस तो नहीं बोल रहा जहाँ मैं गया था अभी? हाँ वहीं बोल रहा है जाने के लिए. ठीक है. इस घर में Revelio. ये पेंटिंग है. हाँ इस पेंटिंग पे कुछ आ रहा है. हाँ. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be, but it looks. हाँ इंटेंशन. इसका चेहरा मिटा दिया गया है ऐसा लग रहा है. ये कौन है? मुझे ऐसा लग रहा है जो वो जादूगर रैनरॉक के दोस्त हैं, या तो वो खुद हैं या फिर उनके कोई दोस्त की पोर्ट्रेट लग रही है मुझे. यहाँ पे और कुछ नहीं है. ओ यहाँ पर कुछ है. This well looks familiar. ओ अरे ये वही गांव है फेल्डक्रॉफ्ट जहां से वो बच्ची आई थी हमसे पहले, जो पुराना स्टूडेंट था जिसको एंशिएंट मैजिक दिखता था. ओ अच्छा उसका नाम मैं नाम भूल गया. उनका था ये. Reparo. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. ये है तो वही जगह. डेफिनेटली वही जगह है ये. डॉक्टर सेबेस्टियन. चलिए ठीक है. Sebastian,
This house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. ठीक है? What do you? I found a pensive that day in the अच्छा वो प्रोफेसर ही तो थी, वो with लेडी. a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganac. और मुझे लग रहा है कहीं वो उसी ने तो उसे कर्स नहीं दिया. The keepers, like in Quidditch, and you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. अरे नहीं भाई, सच बोल रही है. Isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? I think मुझे ये यूज करना पड़ेगा. सही है. A stairwell. ओह, यहाँ तो एक खुफिया रास्ता है. ठीक है. भाई मैं बता रहा हूँ, वो सेबेस्टियन जो बोल रहा था ना कि मुझे एक आवाज सुनाई दी और जिसने मतलब फिर उसके बाद एक मतलब ब्लास्ट मैजिक स्पेल की आवाज आई. मुझे लग रहा है शायद वो इज़िडोरा तो नहीं है कहीं. मैं अपने एक मिनट रुक जाओ यार, स्पेल सही कर लेता हूँ भाई. ऊपर मुझे ये चाहिए. ठीक है, सही है, ठीक है. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. मुझे ऐसा लग रहा है शायद इससे जलाना तो नहीं है. Confringo. नहीं. Explore the cellar. I traveled here to learn, but I long to help. My internal struggle is overwhelming. It's as though the magic wants to heal, and I'm the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? I cannot look into their eyes knowing that I could lessen the burden of heartache. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it wouldn't hurt to help him. I could further my research, of course, but that would be a fortuitous consequence of doing something good with this ability. Seems these journal entries are from Isadora's travels. भाई मुझे ऐसा लग रहा है इज़ोडोरा डेफिनेटली डार्क मैजिक सीखने की कोशिश कर रही थी और हमें इसे सर्च करना है. यहाँ पे क्या एक और लेटर है. It's my second week in the camp. More arrive each day. The Mughal doctors and even some of our own healers are doing all that they can for them. The grief is palpable. The ones who have survived the plague are forever damaged by their loss. A fever may pass, the skin may mend and scar, but the devastating sorrow remains. I saw a man, much like my father, who had lost a child. I couldn't bear it. I long to give him some shred of relief. I'm beginning to think that the others are wrong. I have the power to help these souls. It seems as arbitrary not to help them as it would be rid them of their torment. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. और यहाँ पर एक मिनट कुछ लग ही रहा था मुझे. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true.
and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. वो दिक्कत ना हो जाए, अंडरग्राउंड जा तो रहे हैं। Tempted to hold my breath. चलिए चलते हैं। ठीक है, हम लोग अंडरग्राउंड पहुंच गए। Why would the door lead us here? Sebastian, look. ओ, एक और नया दरवाजा। ओ भाई साहब। ये मैप का टुकड़ा लग रहा है शायद। Why hide a triptych here? Revelio. Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Ancient magic से तो curse नहीं है definitely, but dark magic से हो सकता है। It's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. वो तो ठीक है भाई, चलिए ये वाला क्वेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। बट सीरियसली बहुत कंफ्यूजन हो गई है यार, मतलब किसने श्राप दिया है भाई एन को, ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक। जहां तक मुझे लग रहा है इज़ोडोरा ने शायद वो इज़ोडोरा थी, क्योंकि वो बोलते किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। ओके, अब क्वेस्ट में हमारे पास क्या बचा है? काफ़ी लंबा एपिसोड होगा इस बार का। एस्ट्रोनॉमी क्लास है हमारी। Professor class is at the top of the astronomy tower upstairs from the entrance to the room of requirement. I should head there now, attend astronomy class. ठीक है, ये क्लास अटेंड करते हैं गाइस और उसके बाद ये एपिसोड एंड करेंगे। बहुत लंबा एपिसोड होने वाला है क्योंकि। And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. आई थिंक ये टैरो कार्ड्स पढ़ रहे हैं शायद। हमारे कपड़े तो देखो यार, अलग ही। Ladies, Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos. वो तो पक्का डेफिनेटली इंडियन है, साड़ी लगाई हुई है इन्होंने। Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. हो सही, हम लोग आज मतलब स्टार्स को स्टडी करने वाले हैं, ऐसा कुछ है। वाओ। Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. यार वैसे सही बताओ, इंडियंस ऐसे इंग्लिश नहीं बोलते हैं यार, पता नहीं ये गेम्स वाले, ये मूवीज वाले ऐसा क्यों दिखाते हैं। ओके, आर टू फोकस। ओ सही, अमेजिंग।
Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? ये ठंड के बारे में बुरे हाल है। Dismissed. अब डेफिनेटली प्रोफेसर शाह हमें कुछ ना कुछ असाइनमेंट जरूर देंगी। ऐसा होता है वैसे अभी तक। Hello. ठीक है, I इससे don't बात believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an ये भी इंडियन है, अमित Hello, ठक्कर। Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. इनके It's my कपड़े क्या हो own रखे? I finally got गेम में my कुछ glitch hands आ on the रखा new है। Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. ठीक है, अब ये कुछ मिशन करना होगा इसके साथ भी। Find the telescope in the storage area. नहीं, ये तो यहाँ पे। Serious, and my hands are too cold to use a telescope. It's a dog, isn't it? इधर से देखिए स्टोरेज एरिया। ये रहा। This was his old telescope. Looks practically brand new. लोअर डेक तो यही, हाँ ये रहा। The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you like help finding it, huh? And हमारी you मदद need चाहता someone होगा to help definitely. you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? चलिए, अब ये वाला मिशन करना है हमें। The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onward, some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little Revelio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Castle wall? Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then.
ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है इनको लेवियोसो तो करना ही पड़ेगा, या ये सॉरी ये वाला विंगाडियम लेवियोसा। Wingardium Leviosa. नहीं, Revelio. Expelliarmus. ओह मुझे फायर वाला वो चाहिए। अरे नहीं, मैंने गलत किया है शायद। Confringo. Revelio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Amit. ओह ये क्या हो? There's a table. हाँ ये वो टेबल है। Do the honors. Go on, try it out. ये अच्छा यहाँ पे टेलीस्कोप रखना है हमें। The constellation should appear near the center of your view. हाँ मुझे लगता है इसे स्टार से मैच करना होगा हमें। ओह अच्छा ऐसे मैच करना है भाई। हाँ अब हुआ। ओह I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Say it. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. ठीक है, चलिए एस्ट्रोनॉमी क्लास वाला हो गया है। चैलेंज अनलॉक्ड, फाइंड एस्ट्रोनॉमी टेबल्स। नहीं मुझे कुछ ऐसा खास, मुझे आई डोंट नो लाइक स्टोरी से इसका क्या रिलेशन है, इसकी क्या जरूरत थी इसका, बट वो ये एस्ट्रोनॉमी क्लास द हाई कीप। ये क्या है? Natty is waiting for my near Natty is waiting for me near a castle ruin. Meet Natty near Feldcroft castle. मुझे लगता है शायद Natty ने बोला था लास्ट टाइम जब हम मिले थे कि वो यू नो लाइक रेनरॉक के बारे में जैसे भी कुछ खबर मिलती है वो हमें बताएगी, शायद वही होगा। और दोस्तों ये वाला एपिसोड हम लोग, ये वाला क्वेस्ट हम लोग अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो सबसे पहले हमारी पहली बार मुलाकात हिप्पोग्रिफ नाम की उस बीस्ट से हुई, और यू नो लाइक उसे भी काबू करना बचा हुआ है। डेफिनेटली आगे के एपिसोड में वो ऐसा होगा, और जिस दिन हम उसे काबू कर लेंगे क्या मज़ा आएगा ना। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे प्यारे प्यारे हमने 3 बीस्ट और यू नो लाइक अपने काबू में किए। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेबेस्टियन यू नो लाइक की बहन एन से भी मिलने फेल्डक्रॉफ्ट गए, और हमें पता लगा कि किसी ने उस पर यू नो लाइक काले जादू का यूज़ करके उसे श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होता है। और जब हमने उस जगह की छानबीन की जहाँ पर उसे ये श्राप लगा था, हमें पता लगा वहाँ पे यू नो लाइक एक्चुअल में इज़ाडोरा का घर था। और इज़ाडोरा की बेसमेंट को जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि वो कुछ काले जादू के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ तक मुझे लगता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये जो यू नो लाइक काले जादू का श्राप जो एन को लगा हुआ है, कहीं इसे इज़ाडोरा ने तो नहीं दिया। अभी दोस्तों हमें आगे की कहानी में पता लग पाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अब अगले एपिसोड में यू नो लाइक नैटी से मिलने वाले हैं।
लास्ट टाइम जब हम लोग नाइटी से मिले थे उसने कहा था कि वो रैनरॉक और रुकवुड के बारे में लाइक छानबीन करेगी और जैसे ही कुछ उसे अच्छी न्यूज़ मिलेगी वो हमसे मिलने आएगी, और उसका हमें एक ऑल पोस्ट आया हुआ है और वो हमसे मिलना चाहती हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों अगले एपिसोड में हम लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स और आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस मुझे बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे अपलोड्स करते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा आप सभी लोगों से अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।